ਬੱਚਾ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵਿਚ ਆਰ made from alpha amino acids, and we can say alpha amino acids, they are the building blocks of proteins. So when proteins they are hydrolyzed, so we are getting alpha amino acids, and then the mix of alpha amino acids is separated by using a number of techniques like electrophoresis we have just discussed, and we can also use chromatography technique. We can use paper chromatography or column chromatography. So then this is a main method जिस ਤੋਂ ਅਸੀਂ bulk ਵਿੱਚ amino acids prepare ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Then second method is number of methods are there. ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ method discuss ਕਰਾਂਗੇ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ second method ਹੈ by direct amination of alpha halo acids. So alpha halo acids means we have acid, and on the alpha carbon we are having halogen like chlorine. So this is alpha chloropropanoic acid. So when this is treated with excess of ammonia, so ammonia can act as nucleophile as well as base. So it will react with carboxylic acid group, acid base reaction, and it acts as nucleophile to attack on this carbon. There's one more hydrogen, so this is CH3 CHNH2 group, and here we have acid base reaction, and when this undergoes alkaline hydrolysis followed by acidification, then this group is again converted to carboxylic acid. So we are getting alanine as the final product. So इस मैथड ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਦ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਲਫਾ ਹੈਲੋ ਐਸਿਡ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ from carboxylic acids by their halogenation, and the reaction we have already discussed in the second year, HVZ reaction, that is Hell-Wohlhard-Zielinski reaction. Then second method is again you have already studied. This is just application part. Gabriel phthalimide synthesis. So in this case we take potassium salt of phthalimide. So ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? We can take we will start with phthalic acid. ਇੱਥੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਕ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋਣਗੇ ਦੋਨੋਂ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਮੋਨੀਆ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥੈਲੀਮਾਈਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ NH, ਥੈਲੀਈਮਾਈਡ. I ਹੋਏਗਾ, I ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਟੈਚ ਟੂ 2 ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪਸ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਸ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਵਿਲ ਗੈਟ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਾਲਟ ਆਫ ਥੈਲੀਮਾਈਡ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਡ ਵਿਦ ਅਲਫਾ ਹੈਲੋ ਐਸਟਰ. So this is ester group. On alpha carbon there is halogen. So what happens? It is a strong nucleophile. It will attack on this carbon with the leaving group out, and this is the product formed, which upon hydrolysis we can carry out acid hydrolysis or alkaline hydrolysis. In this case we are preferring acid hydrolysis. So phthalic acid is formed as a side product, as a byproduct, और ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ A bonds break ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਨਾਲ. ਇੱਥੇ NH2 ਗਰੁੱਪ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, H2N CH2, और क्योंकि ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇੱਥੇ एसिड ग्रुप जनरेट हो जाएगा. प्लस क्योंकि एस्टर है, हाइड्रोलिस तो एसिड प्लस एल्कोहल बन जाएगा. सो दिस इज़ ग्लाइसिन, और ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ H जगह कोई अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं. सो अगेन वी कैन प्रिपेयर अ नंबर ऑफ
ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਲਫਾ ਹੈਲੋ ਐਸਟਰ ਨਾਲ। ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਅਲਫਾ ਹੈਲੋ ਐਸਿਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਆਫ ਦਿਸ ਪਾਰਟ। Then third method is again extension of this method. This is known as thalidomide malonic ester synthesis। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੈਲੀਮਾਈਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਲੋਨਿਕ ਐਸਟਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਥੈਲੀਮਾਈਡੋ ਮੈਲੋਨਿਕ ਐਸਟਰ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਾਲਟ ਆਫ ਥੈਲੀਮਾਈਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। So we start with potassium salt of thalidomide, but instead of using simple ester, we can use here malonic ester. So we are using here bromomalonic ester or chloromalonic ester. So this is bromomalonic ester, और इसमें से कंडेंस करके इस तरह भी लिख सकते हैं। सो उसी तरीके नाल अटैक न्यूक्लियोफिलिक अटैक विद द लिविंग ग्रुप आउट। सो नाइट्रोजन ते एक ग्रुप जोड़ा है अटैच हो जाएगा। सो अगेन these are ester groups, both are ester groups. So we can, but now the main part is we are having here one hydrogen which is acidic in nature. So we can replace this hydrogen by some other group. उसके लिए ऐसे की करांगे, we have to use strong base। ये आप ऑलरेडी मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस भी कर चुके हैं पहले चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ। सो स्ट्रॉन्ग बेस लेता, दिस बेस विल एब्सट्रैक्ट द प्रोटोन। ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सो मैं बहुत डिटेल नहीं दस रही। एंड इन सेकेंड स्टेप वी विल ऐड सम एल्काइल और सम अदर ग्रुप, जिस तरह कि मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेंजाइल क्लोराइड ऐड कर रही हैं। सो इतने C नैगेटिव जनरेट हो जाएगा, और ये माइनस जो है कार्बन ते नैगेटिव चार्ज इस कार्बन ते अटैक करेगा एंड इट विल गो आउट। सो एक होर एल्काइल ग्रुप जो है इंट्रोड्यूस असी कर देंगे। सो दिस इज C, और कार्बन ते ये वाला बेंजाइल ग्रुप जो है इंट्रोड्यूस हो गया है। एंड वी आर हैविंग 2 ester groups here। Then simply upon hydrolysis we can carry out alkaline hydrolysis, and then acidification and followed by heating, which helps in decarboxylation। तो उसके नाल की होएगा अगेन थैलिक एसिड, क्योंकि जो असी हाइड्रोलिसिस करांगे ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और एस्टर की भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, बट ये एस्ट्रिक हाइड्रोलिसिस नहीं है, अल्कलाइन है। तो इत्थे COO नैगेटिव K पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। जो असी प्रोटोनेशन करांगे तो उत्थे COOH 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जनरेट हो जाएंगे, और जो असी डी कार्बोक्सीलेशन करांगे तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इस दे विचों बाहर चला जाएगा एज कार्बन डाइऑक्साइड। सो वी आर लेफ्ट ओनली विद 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हेयर। सो द एंड प्रोडक्ट्स आर फिनाइल ग्रुप हेयर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो रही है तो इत्थे साडे कोल नाल एल्कोहल भी बनेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड, दैट इज़ फिनाइल अलेनिन। और अगर इतने फिनाइल ग्रुप नहीं लगा रहे हैं इस जगह पे सिंपली CH3Cl लगाने हैं तो इतने CH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस होएगा, तो ये अमाइनो एसिड अलेनिन बन जाएगा। बट नाउ दिस इज फिनाइल अलेनिन। सो दिस इज थर्ड मेथड by which we can make a number of alpha amino acids। Then another method is Strecker synthesis। Strecker synthesis। So Strecker synthesis which की करांगे, we treat aldehyde with ammonium chloride and potassium cyanide।
So we carry out the reaction between aldehyde, ammonium chloride and potassium cyanide. तो इसके विच की होएगा ammonium chloride react with potassium cyanide to give ammonia, और जो इतने HCl बनेगा एक तरह बेसिक है, it will give HCN plus KCl. Now this aldehyde will react with ammonia. ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਟੋਨਸ ਦੇ ਅਮੋਨੀਆ ਔਰ ਅਮੋਨੀਆ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਟਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ. So nucleophilic addition reaction followed by elimination, loss of water, and we will get double bond here, and this is known as imine. और क्योंकि एल्डिहाइड तो बनया है, we can also write here एल्डीमीन, और अगर कीटोन होएगा तो कीटीमीन. नाउ इस दे विच क्योंकि अगर ਅਸੀਂ रेजोनेंस देखिए तो नाइट्रोजन ते जो है कार्बन ते पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन ते नेगेटिव चार्ज. तो जो साइनाइड है it will attack on this carbon because it is having sufficient positive charge. So this is RCHCN, and here we have NH negative, and it will take proton from water to give this type of the material which is known as, this part is nitrile and this is alpha amino nitrile. And nitrile ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਿੰਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈ. One is catalytic hydrogenation, another we have hydrolysis, partial hydrolysis or complete hydrolysis, because we now need here carboxylic acid group, so it will undergo complete hydrolysis and in the presence of dilute acid or dilute alkaline media. So ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ complete hydrolysis ਨਾਲ carboxylic acid group introduce ਹੋ ਜਾਏਗਾ. So this is nothing but alpha amino acid, and depending upon the R group required alkyl group, we can start with corresponding aldehyde and we can prepare alpha amino acids. Then another method, we can again start with aldehydes or ketones. So this is reductive amination of alpha keto acids. So reductive amination of alpha keto acids. So इस दे ਅਸੀਂ करना है अल्फा कीटो एसिड लवांगे और उसनों एमिनेशन करांगे, अमोनिया नाल ट्रीट करांगे. So this is acid. अल्फा कीटो means अल्फा कार्बन ते कीटो ग्रुप है. So this is alpha keto acid, and when treated with ammonia, जो ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਟੋਨ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਅਮੋਨੀਆ ਜਾਂ ਅਮੋਨੀਆ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਈਮੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਈਮੀਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ like this, and this imine in this case is comparatively unstable, और ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਈਮੀਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, and it undergo reduction, catalytic reduction, palladium और platinum ਅਸੀਂ यूज़ कर सकते हैं. तो ਇੱਥੇ रिडक्शन हो जाएगी और कार्बन ते हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ते हाइड्रोजन. सो वी आर गेटिंग अल्फा अमाइनो एसिड. अगेन बाय चेंजिंग R we can get a variety of alpha amino acids. So that's all about the method of preparation. book ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ methods ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ. You can go through these methods, but ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ important methods ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ discuss ਕੀਤੇ ਹੈ.